All right. So now endosperm, the primary endosperm cell divide many times to form triploid endosperm tissue having reserved food material. So what happened? Initially, one endosperm form. Now multiple times the triploid endosperm nuclei they divide. ये जो 3 न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म्स 3 न्यूक्लियाई थे ना, तो नाउ ये तीनों न्यूक्लियाई बार बार डिवीजन करते हैं. मेनी टाइम्स दीज 3 न्यूक्लियाई डिवाइडेड, ओके, मेनी टाइम्स टू फॉर्म रिजर्व फूड मटेरियल. 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. अब इनकी वजह से 2 तरह का एंडोस्पर्म डेवलप होता है, प्री न्यूक्लियर टाइप एंड सेल्यूलर टाइप, राइट. प्री न्यूक्लियर टाइप मीन्स व्हाट? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei. तो देखो ये फ्री न्यूक्लियाई है, मतलब जो प्राइमरी न्यूक्लियाई था दे जस्ट डिवाइड एंड सभी फ्री न्यूक्लियाई, खूब सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं एंडोस्पर्म के, मेनी फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म. सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म. Then we have cellular type. Cell wall formation occur and the endosperm become cellular. Cellular type में nucleus के surrounding में cell wall form हो जाते हैं. The cell wall forms around the nuclei. So what you can say? You can say this is a cellular type of endosperm. Now clear everyone? Nuclear type of endosperm में all the nuclei, so many nuclei divided and they are free. Okay, in cellular type, the cell wall develops around the nuclear. Actually, endosperm function is to provide nutrient. They are the reserve food material to provide nutrient to whom? Nutrients to the embryo. ठीक है? किसको nutrient देंगे? Embryo को nutrient देंगे. Okay? Then embryo आ गया. Okay, how the embryo forms? How the embryo forms? From the zygote. How the zygote forms? When the egg and sperm nuclei fuses together. So the embryo develop at the micropylar end. Why at the micropylar end embryo develop? Because at the micropylar end only you have a egg nuclei, na? Like if this is the ovule and this is the micropylar end, here you have egg, okay, and these are what? Synergid cells. So this is the micropylar end. Okay, so what happened? When the pollen tube reaches here, so the sperm nuclei when fuses here, though here only you will get the embryo. Zygote यहीं पे बनेगा, जहाँ zygote बनेगा वहीं embryo बनेगा. So embryo develops at micropylar end of the embryo sac where the zygote is located. Okay, embryogeny, early stage of embryo development. What is embryogeny? It is the early stage of embryo development. The zygote give rise to the proembryo. Okay, the zygote give rise to the proembryo and subsequently to the globular heart shape and the mature embryo. So ऐसा नहीं है कि directly the zygote, since in human reproduction also you will learn like further, the zygote undergoes certain cleavage. They form morula, blastula stages and then you will get the blastocyst, trophoblast and ultimately you will get a embryo. So similarly here also it's not like it directly zygote converted into an embryo. Here also a cell division takes place within the zygote. Okay, and here what happened? Zygote first form proembryo and then a subsequent division you will get a heart shape embryo, you will get a mature and ultimately globular embryo and then ultimately you will get a mature embryo. So this is the structure. See here, this is how you will get a zygote. Now in the zygote you have a nucleus, right, and this is the zygote. Zygote undergo division. Now zygote undergo apical and the basal cell division. When it divides, it forms apical cell and the basal cell. Further, the cell divides within the apical cells, right? And first of all, you have a two-celled proembryo where you have one apical and one basal cell. This is called two-celled proembryo. Then
16 celled embryo. Then again division takes place. You will get 16 celled embryo. After that you will get this globular embryo. ये गदा जैसा लग रहा है, हनुमान जी का गदा. This is the globular shape embryo. And after that further division takes place and it forms a heart shape embryo. Right? Ultimately you will get a embryo, proper embryo. This is the proper embryo which is having heart shape. This joining is hypophysis and this stick is suspensor. ठीक है? So this is the final structure of the embryo. So embryo consists of what? Embryonal axis, cotyledon, plumule and radicle. See here, this is what? Zygote, apical and basal cells. Again the division takes place. You will get a globular stage embryo. This is the heart shape embryo. This is the heart shape embryo. Then what happens? Now the suspensor becomes more small and the heart shape embryo converted into this shape. This is the mature embryo where you have plumule, radicle and cotyledon. Since it has two cotyledon, so it is called as dicot. Some plants have only one cotyledon. It is called monocot. अगर केवल एक है तो monocot, two है तो dicot है. Okay, plumule ultimately, from the plumule ultimately the shoot formation takes place. The radicle undergo the formation of root. ठीक है, radicle से root बन जाएगा and plumules undergo the formation of shoot. All right. Now monocot, same process like the dicot embryo form na. Similarly the monocot embryo also form. Okay, the only difference is monocot has a single lining. Dicot has two, monocot has only one. All other stages are similar only. So here the scutellum called as a cotyledon. This is the monocot seed. Okay, and here you have a scutellum which is called as a cotyledon. This is the cotyledon which is known as a scutellum. Chlorhiza, this is your chlorhiza which is an undifferentiated sheet which cover the radicle. So here chlorhiza protect the radicle and coleoptile protect the plumule. Right? Coleoptile is the sheet which cover plumule. Chlorhiza is the sheet which cover radicle. Plumule undergo formation of shoot, radicle undergo formation of root. So ultimately this is the structure of embryo, right? This is the inside the embryo. Now this is your complete seed having seed coat, endosperm and the pericarp. So basically seed is what? Seed is the fertilized and mature ovule develops into seed. So how the seed forms? Seed forms from what? Seed formed from ovule. Okay, seed forms from ovule. This try to remember. From the ovule only you will get seed. Seed consists of cotyledon. Seed consists of cotyledon, embryonal axis, seed coat, testa, tegmen. Okay, so again seed में आपको क्या क्या मिलेगा? Cotyledon होगा, right? Embryonal axis होगा, seed coat which is a double layer. Now the seed coat is the double layer. You have a seed coat, right? Testa is the outer coat, tegmen is the inner coat. तो दो सीड कोट में दो लेयर होते हैं, टेस्टा एंड टेगमेन. टेस्टा इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, टेगमेन इज द इनर कवरिंग ऑफ द सीड. और बाकी तो सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल, रेडिकल ये सब तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, देन माइक्रोपाइल. अगेन within the seed what you will get? Micropyle. What is micropyle? The small opening on seed coat facilitate the entry of water and oxygen. So seed कहाँ से बन के आया? Ovule से बन के आया, right? How you will get seed? From ovule. Ovule में
you have one opening called as micropyle opening through which the pollen tube enters, right? So ultimately that ovule only converted into seed na. So the seed is having a small opening. That opening is called as the micropylar opening, and with the help of that opening only the seed will get air and water in the इन्वायरमेंट. तो जैसे ही सीड को हम ग्राउंड में लगाते हैं और जो पानी डालते हैं, दैट वाटर एंटर्स इनसाइड द सीड थ्रू दैट माइक्रोपाइलर ओपनिंग ओनली. ओके, बिकॉज ऑल अदर एरिया ऑफ द सीड इज प्रोटेक्टेड बाय टेस्टा एंड टेगमेन. तो ऐसा नहीं कि सीड एब्जॉर्ब कर रहा है, द वाटर गेट इनसाइड थ्रू दैट माइक्रोपाइलर एंड ओनली. ओके, हीलम स्कार ऑन सीड कोट. हीलम क्या था? रिमेंबर the junction between the ovule and the funicle which connects ovule to the placenta. तो उसके जंक्शन को हीलम कहते हैं. तो ओव्यूल पे एक कट का मार्क लगा होता है, स्कार होता है, जहां से वो फनिकल से अलग हो जाते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा से अलग होते हैं. दैट स्कार इज हीलम. सीड मे बी एल्ब्यूमिनस होते हैं, मे बी नॉट नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, ठीक है. एल्ब्यूमिनस भी होते हैं सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस भी होते हैं. पेरिस्पर्म इज व्हाट? द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, दैट इज परसिस्टेंस, राइट. पेरिस्पर्म क्या होते हैं? द रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस. न्यूसिलस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, रेमिनेंट, उसको ही पेरिस्पर्म कहते हैं. जैसे ब्लैक पेपर में, सो ब्लैक पेपर में यू हैव अ रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस. डॉर्मेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी. इट इज द स्टेट व्हेन योर सीड इज नॉट जर्मिनेट. ठीक है, सीड हमारी अभी जर्मिनेट नहीं करेगी. सीड कब जर्मिनेट करती है? व्हेन इट गेट अ हार्मोनल इंडक्शन स्टिमुलस फ्रॉम जिब्रेलिन. सो तब वो जर्मिनेट करेगी. जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करती है, प्रोसेस कंसीडर्ड एज अ डॉर्मेंसी. द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्ड इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प. तो अब ओवरी की जो वॉल है वो डेवलप्ड होती है इनटू अ फ्रूट एंड कॉल्ड एज पेरिकार्प. तो ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ovary converted into fruit, right? The true fruit, now we have two types of fruit, basically true and the false fruit. True fruit which develops from ovary considered as a true fruit. False fruit which is not developed from ovary but develops from other than the ovary. Like अगर flower के thalamus से fruit develop हो जाता है, not from ovary, then it is called false fruit. So true fruit, only the ovary contributes in the fruit formation. False fruit, thalamus also contribute in fruit formation. So false fruit में fruit do not develop from ovary. Please remember these points. False fruit do not develop from ovary. True develop from ovary. क्लियर? यहां तक समझ में आया? फ्रूट बन गया. नाउ व्हाट हैपेंस टू द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर? जब मान लो कि फ्लावर है, ठीक है, सपोज यू हैव सीन अ गुआवा प्लांट, गुआवा ट्री. सो गुआवा ट्री में गुआवा आने से पहले क्या होता है? फ्लावर निकलते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है. देन व्हाट हैपन? फ्रॉम दैट ओवरी स्मॉल गुआवा स्टार्टेड डेवलपिंग, फ्रूट डेवलपिंग. सो द पेटल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर they just shed off. Okay, and the ovary converted into fruit, and within the guava you have a seed also, right? So that seed forms from ovule. Okay, वो seed कहाँ से बना? Ovule से बन के आया. Now clear everyone? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.